ओके गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी पोस्ट एपीआई भी अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम हमारी कमेंट एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट के लिए सर्विस लिखेंगे, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे और इसके बाद उसके लिए कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ाइल बना लूँगा सर्विस में, जिसका क्लास नेम मैं दूंगा कमेंट सर्विस। ओके, कमेंट सर्विस। So actually it has to be interface, not a class. Okay, since it is a service, so let me change to class to service and class to interface. Okay, और यहाँ पर हम सारी सर्विस लिखेंगे। तो सबसे पहले कमेंट को क्रिएट करने के लिए सो इट विल रिटर्न क्रिएटेड कमेंट। ओके, और क्रिएट कमेंट, ऑलराइट, और इट विल टेक कमेंट एज अ कमेंट एंड पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी इसलिए क्योंकि ये कमेंट जो है वो किस पोस्ट के रिलेटेड है, इसलिए हमें पोस्ट आईडी भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिसका टैब होगा इंटीजर। ठीक है, और एक आईडी लगेगी हमें यूज़र आईडी कि ये कमेंट किस यूज़र ने की है। ठीक है, तो इसका टाइप भी इंटीजर होगा, यूज़र आईडी, ऑलराइट, एंड इट विल थ्रो एक्सेप्शन। कौन कौन से एक्सेप्शन थ्रो यूज़ करेंगे? एक तो यूज़र एक्सेप्शन कि जो यूज़र आईडी हमने प्रोवाइड की है वो वैलिड होनी चाहिए, अगर नहीं है देन हम वी विल थ्रो यूज़र एक्सेप्शन। ऑल्सो वी विल थ्रो पोस्ट एक्सेप्शन कि जो हमने पोस्ट आईडी प्रोवाइड की है वो भी वैलिड होनी चाहिए, अदरवाइज हम पोस्ट एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट कमेंट को। अच्छा, कमेंट कहाँ से है? इंस्टाग्राम डॉलर। ओके, ठीक है, और इसके बाद कमेंट को लाइक करना है और कमेंट को अनलाइक करना है, और इसके अलावा वन मोर मेथड है, कमेंट को आईडी से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। इट विल ऑल्सो रिटर्न अ कमेंट, फाइंड कमेंट बाय आईडी, इट विल टेक इंटीजर comment id, it will take comment id. Okay, it will throws a comment exception चूँकि हमने कमेंट एक्सेप्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे थोड़ी देर में। चलो सबसे पहले कमेंट एक्सेप्शन को क्रिएट कर ही लेता हूँ मैं। तो क्रिएट क्लास को कमेंट एक्सेप्शन और विल टेक इट इनसाइड द exception package. Okay, not in a service package. So now finish, and here I will just write constructor, comment constructor, अच्छा, comment exception. Okay, comment exception, all right, and here I will super class, and here I will pass the message, and here I will receive this message string. Tab of this message will be string message. Okay, and that's it. Now I have to write the handler for this comment exception. So जो handler है वो मैं global exception में लिखूँगा यहाँ पर इसके लिए। तो क्या करूँगा, ये जो कौन सा है मेथड वैलिड नॉट है, नहीं, हाँ, पोस्ट एक्सेप्शन हैंडलर है, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। फिर इसको मैं चेंज कर दूँगा। सबसे पहले पोस्ट से इसका नेम चेंज करके मैं रख दूँगा कमेंट एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, और यहाँ पर पोस्ट एक्सेप्शन की जगह कमेंट एक्सेप्शन दे दूँगा। ऑलराइट, नाउ हियर ऑल्सो आई विल चेंज पोस्ट टू कमेंट। ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट गाइज। या सो इसको सेव कर देंगे और इसके साथ में जाऊंगा कमेंट सर्विस में, और दो सर्विस बाकी है कमेंट को लाइक करने के लिए और अनलाइक करने के लिए। तो जल्दी से इसको लिख लूँगा।
it will also return a comment like comment, and it will take a integer comment id, means which comment I want to like. तो सबसे पहले integer comments id, and c has to be small, not capital. Okay, comment id and user id. Okay, so it will also, and its type is also integer. Now which user like this comment, so that's why we have to take user id as well, and it will throws a comment exception, comments, sure, comments. Okay, user id integer. Why it's giving me comment like comment integer, and user id acha throws, and it will throws a comment exception as well as the user exception. Okay, so user exception, and इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी और पेस्ट कर दूंगा. लाइक की जगह यहाँ पर लिख देंगे अनलाइक कमेंट्स, एंड अदर थिंग्स विल बी सेम, integer comment id, integer user id, throws, comment exception and user exception. Okay, so our service is ready. Now we have to write the service implementation for it. So let's create new class. Okay, तो service implementation कहाँ पर है हमारा, where it is, here it is. ओके, सो यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट करूँगा और इसमें लिख दूँगा कमेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, comment service implementation. Okay, and finish, and I have to implement the comment service here. Implements comment service. Again it's giving me error. Acha, comment. Okay, comment service, and now it will ask us to add unimplemented method. So simply we will click on this button and it will add unimplemented method for us. Okay, and now we have to write the business logic for it. So before we starting here, I have to annotate this class with the service annotation, because we will write here our business logic, that's why. Okay, or before we starting we need one more thing, and it is nothing but comment repository. Okay, so let me create the comment repository as well, post repository, user repository, and here I will create one interface called comment repository. Okay, and it will extends the JPA repository. Okay, and here I have to give comment model. Okay, comment model, and type of this type of id of comment. Okay, so the type of id is integer, and that's it. Now we can start the writing our business logic in comment service implementation. Okay, so first of all we have to write the logic for creating comment. Okay, so let's write it then, but let me first auto-wire the comment repository here, because we need it. It's a private. Okay, and comment repository, comment repository, okay, and we have to auto-wired it. So let's annotate it with auto-wired. Now let's write the comment.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कमेंट नहीं, राइट कमेंट, क्रिएट कमेंट, सॉरी. Okay, also I need the user because okay, I need user service as well, so let me auto add it as well. User service, and let me auto add it. Okay, now I will find the user equal to user service dot find by id, and here I have to give user id. Okay, so user id को find कर लिया. Now what I will do, I will create one. Okay, also I will find this post by this post id. Okay, so I need one more things, and that is nothing but post service. Okay, post service, and also I will auto add it. Okay, so now let me write here post equal to post service, and post service dot find post by, okay, find post by id, find post by id. Okay, post id, and that's it. Also let me import it so it won't give us error any. Okay, now comment के लिए हमें user dto चाहिए होगा, because we have to set the user in the comment so that we can easily find out which user created this comment. Okay, so user detail, user dto and user dto equal to new user dto. Okay, and user dto dot set email, so user dot get email, here I will set, and user dto dot set id, user dot get id, then user dto dot set name, user dot get name, and then user dto dot set user image, and here user dot get image, right? Then user dto dot set username, and user dot get username. That's it. So guys, हमने यहाँ पर user dto नया क्रिएट किया, एंड इसके बाद ये यूज़र जो फाइंड किया था हमने इस यूज़र आईडी की मदद से, उसकी डिटेल इसमें सेट कर दी. ओके, अब क्या करेंगे, कमेंट जो हमें मिलेगी बॉडी रिक्वेस्ट से, हम जो कमेंट गेट करेंगे उसमें हम यूज़र सेट करेंगे, सेट यूज़र एज अ यूज़र dto, and now will save this comment. Okay, so let's save it. Okay, इसके बाद one more thing we have to set is comment dot set created at. Okay, when this अच्छा comment में, all right, when this comment is created. Okay, तो इसके लिए लोकल डेट टाइम का यूज़ करेंगे, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ. ऑल राइट, and then we have to save this comment. Okay, so let's save it, comment and created comment. Since it is a new comment, we'll give it created comment. Okay, and now comment repository dot save and comment. ओके, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने पोस्ट मॉडल में एक कमेंट का सेक्शन दिया हुआ है,
सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मॉडल. वेर इज़ अवर मॉडल, वेर इज़ अवर ओल्ड मॉडल, मॉडल रिपोजिटरी ईयर. ओके, देयर इट इज़. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर है. हाँ, यहाँ पर है कमेंट. ठीक है, 1 to many का रिलेशन है इसके साथ, और अरे लिस्ट में इसको हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो कहाँ पर है मेरा कमेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो क्या करूँगा मैं, जो पोस्ट मैंने गेट किया है, ठीक है, पोस्ट डॉट इसमें से गेट कर लूँगा, गेट कमेंट्स एंड डॉट ऐड न्यू कमेंट, क्रिएटेड कमेंट. इसमें क्रिएटेड कमेंट को ऐड कर दूँगा. ठीक है, और दैट्स इट. एंड ऑल्सो इसको भी, पोस्ट को भी सेव करना पड़ेगा. तो आई नीड वन मोर थिंग एंड इट इज़ post repository. Okay, so let me import it, post repository, क्योंकि पोस्ट को भी यहाँ से अपडेट करेंगे जब नया कोई कमेंट क्रिएट करेंगे तब. तो इसको ऑटो ऐड कर लेते हैं. और तो पोस्ट को जैसे हमने यहाँ पर इसमें नया कमेंट ऐड किया, ठीक है, अब पोस्ट को भी सेव करना पड़ेगा. तो पोस्ट repository dot save and post, that's it. And here we will return created comment. okay, so कमेंट क्रिएट करने का लॉजिक ख़त्म हुआ. इसके बाद फाइंड कमेंट बाय आईडी कर लेते हैं. ठीक है, सो चलो जल्दी से यहाँ पर इसके लिए लिख लेता हूँ मैं. सो इसमें जो टाइप आएगा वो ऑप्शनल आएगा, ऑप्शनल. ओके, ऑप्शनल कमेंट, या तो कमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो OPT नेम दे देते हैं. एंड कमेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी इंटीजर. ओके, और यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ़ OPT डॉट इज़ प्रेजेंट, then what we will do, we will return OPT dot get, means we will return comment which we have find by using find by id method. Okay, and here if it's not present, then we will throw new exception, throw new comment exception, we'll throw new comment exception. So here we will pass comment not exist, comment is not exist with id, or here I will pass the comment id. Okay, comment id, right, that's it. And now we'll write the logic for like comment. ओके, सो सबसे पहले तो उस यूज़र को हम फाइंड करेंगे जो कमेंट लाइक करने वाला है. ठीक है, यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र बाय आईडी, और इसके बाद कमेंट को भी फेच कर लेंगे. कमेंट इक्वल टू कमेंट रेपोजिटरी आएगा. ठीक है, नहीं, अब तो हमने फाइंड कमेंट बाय आईडी बना दिया है, तो फिर इसी को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, फाइंड कमेंट बाय आईडी. ऑलराइट, सो अब इसको लाइक करना है. ठीक है, तो कौन सा यूज़र लाइक करेगा उसको हमें इसमें सेट करना पड़ेगा कमेंट में. तो अगर मैं आपको कमेंट का मॉडल बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लाइक्ड बाय यूज़र्स करके एक फील्ड बनाई है जो कि सेट्स ऑफ यूज़र DTO का है. ओके, इट विल कंटेन सेट्स ऑफ यूज़र DTO. सो या अब इसमें ऐड कर देंगे, जो भी यूज़र लाइक करेगा उस यूज़र को इस सेट में ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो वेर इज़ अवर कमेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, वेर इट इज़ यहाँ पर है. All right, so first of all we need one user DTO, so let's create it. user DTO
equal to new user DTO, and now I will copy all these things because एक ना कोड हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। ऑलराइट, अब क्या करेंगे कि ये जो हमने कमेंट गेट की है, ठीक है, कमेंट डॉट, कमेंट का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर मिस स्पेल कर दिया, तो इसको करेक्ट कर लूँगा सबसे पहले तो। एंड नाउ आई विल राइट कमेंट डॉट get liked by user, and then I will add new user into it, right? And now I will save this comment. So चलो यहीं पे रिटर्न कर देता हूँ। So comment repository dot save and comment, right? Comment repository dot दैट्स इट। एंड कमेंट को अनलाइक करना है अब, ठीक है। तो कमेंट को अनलाइक करने के लिए भी सेम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पर हमें चेंज करना है रिमूव। ऑलराइट, वहाँ पर लाइक में हम क्या करते थे, ऐड करते थे न्यू यूज़र को, एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे वही यूज़र को, ठीक है। एंड दैट्स इट, बाकी कोई चेंजेस करना नहीं रहेगा इसमें गाइस। ओके, अब इसके लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत है, तो चलो कंट्रोलर में जाके कंट्रोलर बनाते हैं इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले कहाँ पर है कंट्रोलर, सर्विस रिपोजिटरी मॉडल, यहाँ पर है कंट्रोलर, ठीक है। एक्चुअली मैं ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सही रहेगा। न्यू क्लास, यहाँ पर लिख दूँगा कमेंट कंट्रोलर, राइट। और सबसे पहले तो मुझे इसको एनोटेट करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर से, ओके। और इसके साथ रिक्वेस्ट मैपिंग से भी मुझे रिक्वेस्ट मैपिंग से भी एनोटेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं एंड पॉइंट दूंगा API एंड कमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर इसका। तो सबसे पहले विल नीड कपल ऑफ थिंग्स हियर। First of all, we need comment service, or let me annotate it with auto-wired, and also we need the user service as well. Okay, user service and auto-wired it, right? And then anything else we need? I don't think so. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ये क्या आ गया, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इट विल रिटर्न कमेंट्स, एंड नेम दे देंगे इसका क्रिएट कमेंट हैंडलर। सो क्रिएट कमेंट हैंडलर, इट विल टेक कमेंट, और इसी के साथ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर वन मोर थिंग वी विल नीड इज़ अ टोकन, तो स्ट्रिंग एंड टोकन। ओके गाइस, सो ये जो कमेंट है ये तो हमें रिक्वेस्ट बॉडी से मिलेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट बॉडी से यहाँ पर एनोटेट कर दूँगा रिक्वेस्ट बॉडी, एंड ये जो टोकन है वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट हेडर से, तो इसको भी हमें
रिक्वेस्ट हेडर से एनोटेट करना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट हेडर में वी ऑथोराइजेशन से मिलेगा हमें, ठीक है, ऑथोराइजेशन, राइट। और इसी के साथ क्रिएट हैंडलर जो हमारा है वो पोस्ट मैपिंग होने वाला है, तो यहाँ पर पोस्ट मेथड होने वाली है, इसलिए पोस्ट मैपिंग लिखेंगे, और इसका एंड पॉइंट हम डिफाइन करेंगे क्रिएट, राइट। एंड हियर विल राइट द लॉजिक. So first of all, we will find the user profile by using user service dot find user profile, okay, and providing the token. इसके बाद यहाँ पर कमेंट, अच्छा कमेंट सो क्रिएटेड कमेंट्स देते हैं इसको, और कमेंट सर्विस, अच्छा कमेंट सर्विस डॉट क्रिएट कमेंट, और सबसे पहले तो कमेंट देनी पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी पोस्ट आईडी, राइट। सो पोस्ट आईडी जो है वो हम कहाँ से देंगे, इसमें तो हम रिक्वेस्ट बॉडी में कमेंट देंगे, पोस्ट आईडी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, पाथ वेरिएबल में, ओके, पोस्ट आईडी। सो पोस्ट आईडी को यहाँ पर रिसीव करेंगे, पाथ वेरिएबल, ओके, पाथ वेरिएबल, it will be integer and post id, all right। so यहाँ पर देते हैं पोस्ट आईडी, एंड यहाँ पर देते हैं यूज़र आईडी, तो यूज़र डॉट गेट आईडी, that's it। now let's add the throw declaration. Also one more declaration is comment exception, so when I over it, okay, and now we'll return new response entity, return new response entity, क्यों नहीं आ रहा है response entity, okay, and here we will pass created comment and http status dot okay, great। अब इसके बाद हमें लाइक करनी है कमेंट, ठीक है, इसके लिए हैंडलर लिखेंगे, और इसके बाद अनलाइक के लिए हैंडलर लिखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इट विल ऑल्सो रिटर्न द कमेंट, सो लाइक कमेंट हैंडलर, और इट विल टेक comment id from the path variable, and from the request header it will take the token, okay। so let me provide a token from request header and authorization, okay, string token, also it will take one more thing is comment id, okay, so let me and it will come from a path variable, so it's gonna be integer and comment id ch2p small, not capital, right, and let's so in the like it will be the put mapping, okay, this method will be put method, so we'll annotate with the put mapping, and here I will give like and comment id, okay, comment id, that's it। now let's find the user profile first, and user equal to user service dot find user profile by token, and now comment
comment. Let's run the comment repository dot like. अच्छा, comment repository C capital क्यों आया, C चाहिए हमें small, and like comment repository. क्या दिक्कत आ रही है, comment repository dot सॉरी comment सर्विस आएगी यहाँ पर, service dot like comment. ओके, comment id and दूसरी होगी user id. Here will pass the user id right. इसके बाद user id कहाँ से आएगी, user dot get id से. Okay, now it will ask us to throw declaration, so let's add the declaration. Okay, it's done, and now we will return new response entity. Return new response entity. Okay, and here we will pass the comment, or let me change the spell here. Often mistake the spell means. Okay, http dot okay, right. Think that's it, guys. Like comment is done. Now let's okay, now let's copy it and write another method, and it is nothing but unlike. Now let's write the API for unlike comment. Over here we will have to change the change the name of comment handler to uncomment handler. Okay, means like comment handler to unlike comment handler, and other thing will be same except this unlike comment. Okay, oh, I think now that's it, guys. So let me save all this thing. So first I have to run it, run as, and I will save all this. Okay, and if it will not give any error, then we will check or test this API. So guys, it's compiled successfully and didn't give any error. So let's test our comment API. So let me open Postman, and here our Postman is opened. Okay, and now we have to create one comment. Okay, so in create comment I have to give the post ID. Okay, so which post I have, let me check. Unlike, or let me like this post. Okay, and I have 152 post ID is 152. So let me create comment for it, 152, and also let me copy the head token from it. So copy and like create comment, and here I will pass this token. All right, and save and comment. Okay, so इसमें मैं कंटेंट क्या दूंगा, ग्रेट कार. सो नाइस पोस्ट दे देता हूँ. ठीक है, नाइस पोस्ट पढ़ी. ओके, नाइस पोस्ट पढ़ी. Let me hit this API, and it's giving me unauthorized error. So let's check what happened. So it says not acceptable representation. Cha, not acceptable. All right, why not acceptable, huh? Comment
created comment, post mapping, and let's check the comment service implementation. Here we will return created comment repository dot save comment, created comment, return the created comment. Okay, and since it is giving us error, so let's system.out.println comment controller. Where is the comment controller? Here is our comment controller, and system.out.println, let me created comment, and this and this. Here I will like write created comment. Okay, and I will save it, and I will run it again and check what's the error. Oh, it's already code was already in use. So let me stop it. Now let me rerun it. Okay, so yeah, now it's compiled successfully, and let's hit API. Let's check. Okay, so not acceptable, and okay, so दिक्कत ये हुई है कि यूज़र सर्विस ऑटो ऐड यूज़र सर्विस, ऑटो ऐड तो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो यहाँ पर सर्विस, यूज़र सर्विस, पोस्ट सर्विस, and post repository as well. And comment. So let's check this is printed out or not. So out is out command service. Okay, command service and created command. So let's check it's printed out or not. And now I have to hit this API. I think same error. Yeah, request method body is not supported. Oh shit, यहाँ पर आएगा post method. Oh guys, our commit is created successfully. Okay, now let's check the second. So only one mistake is our method is put and I forgot totally to change it to post from put method. Okay, so let's check other methods as well. So here our post controller. इसके बाद है इस कमेंट को लाइक करना है तो कमेंट आईडी पास करनी है एंड टोकन पास करना है, ठीक है। सो लेट्स साइन इन विथ लकी एंड आदित्य. लेट्स साइन इन विथ आदित्य. ओके, एंड नाउ लेट मी टेक द टोकन ऑफ आदित्य. तो ले कॉपी. सो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि हमने जो कमेंट क्रिएट की है यहाँ पर ये लकी ने की है, ठीक है। इसमें यूज़र आ रहा है और इसका कंटेंट यहाँ पर आ रहा है नाइस पोस्ट एंड क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प भी आ रहा है, ठीक है। लाइक्ड बाय यूज़र्स अभी के लिए नल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आदित्य इस कमेंट को लाइक करेगा, तो इसलिए हम लाइक कमेंट यहाँ पर है, लाइक कमेंट देखो। तो यहाँ पर मैं ऑथोराइजेशन में आदित्य का जो टोकन है वो पास कर दूंगा। बॉडी में हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कमेंट आईडी पास करनी है। तो जो हमने कमेंट क्रिएट की है उसकी आईडी है 1
All right, then let's like it. Okay, let's hit, and it's giving us comments like error. So let's check again what's the error. क्या एरर आ रहा है? वेरिएबल comment id for method parameter type integer is not present. Required URI template variable comment method parameter is type integer not present. Right, let's check. कहाँ पर हमने दिया हुआ है? कंट्रोलर में दिक्कत है, स्पेल मिस्टेक हो चुकी है. कमेंट आईडी यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी. कमेंट आईडी यहाँ पर एन आना चाहिए था. ठीक है, नाउ लेट्स अपडेट इट एंड लेट्स. अच्छा, फिर भी एरर आ रहा है. अब कौन सा एरर है? हियर ऑल्सो वी हैव टू चेंज कमेंट आईडी. Right, let's change it and let's hit again. Okay, let me finish to compile. Let me finish it first. So I think it's finished. Now we can hit this API. Okay, again it's give unauthorized method. So like command is absolutely put method. Okay, let's check what's the error. ओके, कुछ तो एरर है, बट व्हाट? कमेंट इज नॉट एग्जिस्ट विथ ID 352. ऑल राइट, सो यहाँ पर फिर मैंने दिक्कत कर दी है. ओके, तो यहाँ पर मैं देखूँगा मुझे क्या क्या पास करना है. सबसे पहले मुझे पास करनी है कमेंट ID. ऑल राइट, कमेंट ID, एंड दूसरी पास करनी है यूज़र ID, इंटीजर यूज़र ID. सही तो है. तो ये जो साइन इन किया है उस यूज़र की ID 352 है क्या? ओ डेफिनेटली, या इसी की वजह से एरर आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, पाथ वेरिएबल में हमने कमेंट आईडी लिया हुआ है और कमेंट आईडी यहाँ पर पास किया है. ठीक है, पहले कमेंट आईडी ही आएगा ना, या पहले कमेंट आईडी और इसके बाद है इंटीजर यूज़र आईडी. ओके, और लेट्स ऑल्सो चेक विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन. So comment where is a like comment. So यहाँ पर comment ID है पहले और इसके बाद है user ID. That's it. और 152 like comments like and 1. ओके, तो फिर से एरर क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पर तो मैंने मिस्टेक नहीं कर दिया ना. सर्विस में कमेंट सर्विस. सो लाइक यहाँ पर यूज़र आईडी. ओके, यहाँ पर भी मैंने यूज़र आईडी दे दी है, लेकिन मुझे देने थे फाइंड कमेंट बाय आईडी, कमेंट आईडी देने थे. Comment ID. all right guys, comment ID, that's it. ओके, छोटी सी भूल ने हमें बहुत, ये यहाँ पर भी सेम मिस्टेक की है मैंने. कमेंट ID, राइट, एंड यहाँ पर भी कमेंट ID. और एक बार इसको रीरन कर लेते हैं एंड अब API को हिट करते हैं. ठीक है, और फिर से वन मोर एरर. अब की बार कौन सा एरर है?
Instance model dot comment. क्या बोला? Not default constructor for entity. Okay, let's then make the default constructor for the comment. So where is our model? Here is our comment, and let me write the default constructor for it. Comment and constructor. Also let me write the default constructor for story as well, because no, story has a default constructor, so it won't give any error, but it's giving error. So let's fix this. Okay, so now let run it again. गाइस आप देख सकते हैं लाइक्ड यूजर्स में आदित्य आ चुका है। अब इसको अनलाइक करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अनलाइक यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और सेम आई विल हिट दिस API and it will give the error. Okay, then let's check what's the error. Comment ID for method parameter type is not parent. Okay, same mistake guys. So यहाँ पर ऐसे आएगा कमेंट, और यहाँ पर भी. Okay, now let's rerun it and check our API. So it's compiled successfully, and now let me hit this API. So guys देख सकते हैं आप फिर से like by users जो है वो empty array हो चुका है. ठीक है, ग्रेट गाइस. सो हमारी कमेंट API भी यहाँ पर ख़त्म हुई. नाउ लेट्स क्रिएट द स्टोरी API. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टोरी सर्विस. सो आई विल गो टू सर्विस पैकेज हियर, and I will write here new class. Actually I have to write the interface, but let's change it. We'll change it. Okay, so story service, nothing else, and we have to change it to interface, and here I have to write this right here I have to write the service for the creating stories and getting stories. Okay, so we will write two service only. So its type is story. First is create story. It will take a story, and second is it will take integer, like which user have created this story. That's why we need the user ID, and it will throws user exception. It will throws user exception. If it doesn't find the user with this ID, then it will throws user exception. Okay, and now we will find story by user ID. Okay, so public, it will return the list of story, and here find story by user ID. So we'll pass the user ID, and this method will give us all the stories related to this user. Alright, so integer and user ID, and it throws user exception and story exception. Okay, so story exception we haven't created yet, so let's implement this story exception. Okay, let me, why it's not giving suggestion when I over it. Okay, first I have to import this list. Now it will give a create class called story, and will create this class in the exception package. Okay, not in a service. So let's finish it, and here I will write story exception constructor
empty constructor, and super message I will pass here, then string and message, right? And now we have to write the handler for the story exception in global handler. Okay, let me copy, Control V, commit exception and story exception. Also I will change this commit exception handler name to story exception. Here also I have to change from comment to story. Now I think that's it. Oh yeah, that's it. So now let's start writing the, okay, we have already write the service, so let me write the repository for the story. Okay, new interface and story repository, and it extends a JBA repository. Okay, JBA repository, and here I have to give model name. Since it is a comment, I will give comment, and I have to give the type of ID of comment. Okay, so it will be integer, and sorry, it's not a comment, but it's okay, model will be story, not comment. Okay, story, yeah, and let me import it. And also I have to write the one query, like when I pass the user ID, it has to give me all the stories related to this user. So for it I have to write one query. So let's write it then. So it will return list of story and find all story by user ID. Okay, and here integer and user ID. Now let's write the query for it. Let me first, oh shit, ये मुझे list को करना पड़ेगा delete. List has comes from java.util. Where is java.util? Java.util is not there. Why java.util is not coming? Okay, let me import manually java.util.list. all right, and we have to annotate it with query, and here I have to write the query, select s from story s, where s dot user. Okay, let me check what contains the story user. It contains user. Okay, then I have to write the in story repository s dot user dot id equal to, and here I will take params user id. Okay, and this user id I will take as a param, and it will be user id. Okay, so this user id will come, I will pass this user id here. That's how I will pass. Okay, now let's write the story implementation for story service. So let me create new class, class
story service implementation. Okay, and I will annotate with service annotation, and here I will need a couple of things. Like first I will need the story repository story repository. All right, and let me auto add it. Now I will import this story repository. Okay, anything else I think I will need? I think I will need user service and user repository as well. Okay, let's private user service, and let me auto add it, also I need private user repository and auto wired. All right, now let's create a story. Okay, so public type of its story, it will return the story since we are creating the new story. So create story, it will take story and story, also it will take integer user ID, and okay guys, give me just 1 minute. Okay, so now let me import this story. Okay, and here I will first of all find the user by this user ID. So user equal to user service dot find user by ID and the user ID. Okay, now I have to import this user as well. All right, and now I need the user DTO, because in my story model I have a user. Here you can see I have a user DTO. Okay, so for setting this user, I need a user DTO in the command service implementation. So where my command service implementation, sorry, not command, actually it's a story. Okay, let me first close all this tab so it's easy for me. कमेंट की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है, JWT की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, कमेंट रिपोजिटरी की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, कमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टोरी की ज़रूरत है। चलो इसको रहने देते हैं। अब लेट्स क्रिएट अ यूज़र DTO इक्वल टू user DTO equals to new user DTO. Right, now we have to import this user DTO, and here I will set all this thing: user DTO dot set email, user dot get email, and user DTO dot set ID, user dot get ID, user DTO dot set name, user dot get name, then user DTO dot set user image, user dot get image, and last में user DTO dot set username, user dot get username. Right, that's it. Now in the story we will set the user,
set user, and this story also I will set the timestamp, set timestamp. So local date time dot now, right? I will set this, and now I will add this story to user. So user dot get stories dot add story. ओके, सो जैसे हम यूज़र को फैच करेंगे हमें यहाँ पर स्टोरी मिल जाएगी. ऑलराइट, नाउ विल रिटर्न स्टोरी रिपोजिटरी डॉट सेव. इस स्टोरी को सेव कर लेंगे आप, ठीक है. हाँ, टेबल में हुआ सेव ये. अब फाइंड स्टोरी बाय यूज़र आईडी, तो इसके लिए लिखते हैं पब्लिक इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टोरी. ओके, फाइंड स्टोरी बाय यूज़र आईडी एंड integer user id, right. Also I have to throw the declaration, add throw declaration. Okay, all right, and let me import this list. Okay, now that's it. Now let me first fetch the user equal to user service dot find user by id and user id. All right, and now let me stories equal to okay, so that's how I will find the story. Okay, it will also work. So what I will do, since I am fetching the user and user have all the stories, so I will user dot get stories. Okay, and I will check if stories dot size equal to 0. And what I will do, I'll throw new story exception. So what I will throw, this user doesn't have any story. This user doesn't have any story. All right. Add throw declaration. Now let me return stories. So why it is giving me error? Story exception. Add throw declaration. Okay, let's add it then. Okay guys, I think that's it. Okay, let me save, and error is gone. So now we'll write the controller for this. So let's write the controller for this. Comment controller. Okay, only no, actually this is a story controller. We have only two controller, create story and find all story of user. Controller, new class, story controller. All right, story controller, and we have to now annotate this story controller with the rest controller. Okay, so let me rest controller. Also one more thing I will annotate is request mapping. Here I will write endpoint API and stories. All right, stories. Now let me write the handler for creating story. So public
response entity, and type of it story. Now create story and create story handler, and here I have to pass the story and user ID. So story will come from request body, type of it's story, and path variable here integer user ID. From path variable I will get the user ID. So now let me provide this user ID. So first of all, it's gonna be post API, means post mapping, and here create, and here I have to pass the, actually no need to pass a user ID here, because user ID will be fetched from token, so I need a token here. Okay, so let's request header and authorization, and type of the token is string token. All right, and from this token I will fetch user ID, I mean user profile, and from this user I will provide the user ID. Okay, so user, and since I need the user service, let me first import it, private user service, and auto add it, user service. Also I need the story service, so private story service, auto wired. All right, and yeah, user service dot find user profile, and what I'll do now, let's create a story. So story, actually it's a created story. Okay, so yeah, story service dot create story and user ID. So user dot get ID I will provide here, and now I will return new response entity and created story and http status, http status dot okay. All right, so now let's add throw declaration, and that's it. Now I need to write one more controller for the find story by user ID handler. Okay, so response entity, it will return the list of story. Okay, so find all story by user ID handler. All right, it will take user ID. Okay, so let's and we'll pass this user ID in a path variable. So integer user ID, and what I have to do, I have to find the user by user ID equal to user service
Here's the top search result. Okay, user service, find user by ID. No, find all user. Find, okay, user service dot find user by ID. And then what I have to do, just list of story and stories equal to story service। अच्छा, स्टोरी सर्विस तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, स्टोरी सर्विस डॉट फाइंड ऑल स्टोरीज, फाइंड stories by user id, find story by user id, and here I have to provide the user id. And now return new response entity, and here I have to pass the stories. Also with stories I have to pass the http status dot okay. That's it, guys. And here it is. Now let me add the throw declaration. Okay, now let me save it, and if it's compiled successfully then we will test it. Okay, but it's giving us one error, and it's saying that type.com Instagram service story service in your configuration, defining bin of type configuration. Considering defining a bin of type story service. Also, let's check what's the wrong with our story service. So here our story service interface, story service, and story service implementation, it's annotated with service as well. क्या कह रहा है ये? Failed story service in control required bin type of, that could not found. Story service not found. Bin type, yeah, I give him. Okay, I think that will be mistake from my side. I haven't implemented the methods. Implement story service. Find story by user id. Okay, now let me change here. Now let me remove it, let me save it. So let's proceed. कहाँ पर एरर है? एरर है स्टोरी कंट्रोलर में. Okay, now let's rerun it again. So I think this time, okay, again it's giving me error. So now what type of error it's giving me? Could not resolve root entity story. Acha. Okay, so this error I think coming from repository, story repository, and story. Here I have to give this like this. Now let's run it. This error has to be solved now. Okay guys, so it's compiled successfully, and now let's create one story. So create story. Here I will provide the token. So let me copy this token, copy, and create story. I will
control A, control V, and let's go to the body. बॉडी में कैप्शन, लव टेडी एंड इमेज. सो मैं इसी को रहने दूंगा और इसी के साथ इसको हिट करूंगा तो इट्स गिविंग मी अनऑथोराइज. ओके, लेट्स चेक व्हाट्स द एरर. नथिंग इज okay. Let's sign in again with Lucky. Lucky will create the new story. Control A, copy and create story. Authorization, Control A, Control V. API stories and create. That's it. And this is our body. In the body we have to pass the caption and image. Okay, so let's hit the API. Again it's giving us unauthorized. So guys, let me check what's the error. So when I go to story controller, API stories, okay, API stories, and this is the mistake. Okay, now it will run successfully. So let me hit it. You can see that Lucky has created one stories, and if I give any other name, love daddy ki jagah car lover, and if I hit it, you can see car lover is coming. Caption is null. Okay, here I have to give this like this. You can see car lover, and our image is coming also our user is coming here, and the ID of this story is 3, and the timestamp is also created. Okay guys, so we have successfully checked this create story API, and now we have to find all the stories by user ID. So I think we have created 3 story of this user Lucky. So this user Lucky's user ID is 353. So let's find all the stories by this user ID 353. Oh, okay, find the story by user ID, and 353, and let me hit it. API stories, or also we have to provide the token here, right? So let me delete it and paste it. Okay, again it's giving us error, and this time error is occur in the console. Invalid token. Okay, so let me copy the valid token, Control A, copy, and I will pass this valid token to this find story by user ID. I think my token is valid. Yeah, token is valid. So what's the problem then? API storage 353. Okay, let's check what error is occur again. Let's rerun it once, and now let's hit this API. Let's check the error. So I think error is nothing. So create. Okay, we haven't provided the mapping here. So here we have to get mapping, and here the ID. Which ID? User ID. User ID, like this. Okay, now let me save this. Okay, here we can also pass user.id, get ID. Let me rerun it again.
Okay, so let's wait. Okay, it's compiled successfully, and now let me hit this API, and you can see, guys, it's giving all the stories of this Lucky. Okay, so Lucky have created 3 stories, and it's giving us all 3 stories. Okay, guys, so I think that's it for our backend. और जब तक मुझे याद है हमने यूज़र कंट्रोलर में कुछ सर्विस बाकी है इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है। सो कौन सी वो बाकी है, चलो देखते हैं। यूज़र सर्विस, यूज़र सर्विस, सो वेयर इज़ द यूज़र रिपोजिटरी, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे पहले रजिस्टर्ड यूज़र की कंप्लीट है। अच्छा, रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पर कैसे हमने कर दिया, ये तो हमने साइन अप वहाँ पर किया था ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड यूज़र बाय आईडी, ये भी कंप्लीट है। फाइंड यूज़र प्रोफाइल, ये भी हमने लिख लिया है। फॉलो यूज़र के लिए भी कंप्लीट है, अनफॉलो यूज़र के लिए भी रेडी है। फाइंड यूज़र बाय आईडीज, आई थिंक इसमें सभी कंप्लीट है, लेकिन लेट्स सी द यूज़र कंट्रोलर कि इसमें कुछ बाकी है। सो या सबसे पहले तो ये फॉलो वाला जो है यूज़र कंट्रोलर में ये बाकी है, ठीक है। तो फॉलो, ओके, फॉलो के लिए कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फॉलो यूज़र आईडी एंड अनफॉलो यूज़र आईडी। सो चलो इसको सबसे पहले मैं पाथ वेरिएबल, इसके बाद ओके 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 ओके, लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पर टोकन फाइंड करूँगा। मैं यहाँ से टोकन रिसीव करूँगा फ्रॉम रिक्वेस्ट हेडर, और ऑथोराइजेशन, और टाइप ऑफ दिस टोकन स्ट्रिंग। टोकन मिल गया टोकन हमें। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र को फाइंड करूँगा। यूज़र प्रोफाइल, यूज़र सर्विस डॉट फाइंड यूज़र प्रोफाइल एंड टोकन। यहाँ से मिल गया हमें यूज़र। अब क्या करना है हमें फॉलो करने के लिए, जो मैसेज रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा यहाँ पर ना, हमें इट विल ओके, it will return a string of a message. all right, यूज़र सर्विस डॉट फॉलो यूज़र, एंड यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमें पहले देनी है रेक यूज़र आईडी एंड देन फॉलो यूज़र आईडी। ओके, तो फॉलो यूज़र आईडी हमने यहाँ पर दी हुई है। रेक यूज़र आईडी में हम यूज़र डॉट गेट आईडी देंगे। ऑलराइट, इसी के साथ इसका काम हुआ ख़त्म। एंड देन सिंस इट इज़ रिटर्निंग अ मैसेज, let's create a message response. So message response equal to new message response, and here we will pass this message. Let's return a new response entity. Okay, return new, अच्छा return तो already है, then new response entity, एंड इसी के साथ यहाँ पर मैसेज रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, और इसके साथ HTTP स्टेटस जो है वो दे देंगे। ओके डॉट ओके, राइट गाइस, दैट्स इट। मैसेज रिस्पॉन्स की जगह हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि सिंस
और वेरिएबल्स नेम इज रिस्पॉन्स, और इट विल आस्क अस टू ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, सो लेट्स ऐड इट एंड दैट्स इट गाइस फॉलो के लिए। ठीक है, अब अनफॉलो के लिए इसी को कॉपी करेंगे। सो ये मैंने किया कॉपी, ये कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और इसमें ये टोकन और यहाँ पर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, और इसमें एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, रेग यूज़र आईडी एंड फॉलो यूज़र आईडी, अनफॉलो में भी सेम है। यहाँ पर मैं पहले तो अनफॉलो लिख देता हूँ। ठीक है, अनफॉलो में रेग यूज़र आईडी एंड फॉलो यूज़र आईडी। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे टोकन रिक्वेस्ट हेडर से, रिक्वेस्ट हेडर। तो लेट्स टेक द टोकन ऑथराइजेशन, एंड यहाँ पर देना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग। तो टाइप ऑफ दिस token. Now let's throw the declaration. Okay, now let's so unfollow user is complete, and now let's implement this reg user. So reg user में बहुत ही easy है, कुछ नहीं करना, केवल user equal to user service dot find user profile, okay, token, and that's it. Here we have to pass new response entity, return new response entity with user http status dot okay, that's it. अच्छा, ओके, इट्स अ मैसेज, ओके, रैक है तो डेफिनेटली इसका टाइप जो है वो यूज़र आएगा। ओके, एंड इट विल ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। ग्रेट गाइस, सो आई थिंक अब हमारी सारी एपीआई अपडेट यूज़र की एक बाकी है। ठीक है, सो लेट्स अपडेट यूज़र की इम्प्लीमेंट कर लेते हैं लगे हाथ। अकाउंट एडिट, ओके, सो ये होगा पुट मैपिंग एंड अकाउंट edit, right? And here we have to pass the authorization token and request. All right, so now what will we do? First we'll get the user profile. Okay, so user equal to user service dot find user profile token, and now we'll okay, let me change the name it reg user since user is already defined. So updated user में हमें सबसे पहले तो updated user means जो रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र मिल रहा है वो पास करना है, और दूसरा पास करना है एग्जिस्टिंग यूज़र। तो मैं यहाँ पर रेग यूज़र पास कर दूँगा एग्जिस्टिंग यूज़र में, राइट, एंड इट विल आस्क अस टू ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। Now let's return here new response entity updated user के साथ updated user http status dot okay. alright guys, that's it. तो हमने कितनी API इम्प्लीमेंट की? फॉलो अनफॉलो यूज़र, रेक यूज़र की और ये अपडेट यूज़र की। ठीक है, तो चलो लगे हाथ इसी को
भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फॉलो यूज़र के लिए, सो जो आदित्य है वो लकी को फॉलो करेगा। तो लकी की यूज़र आईडी 353 है। तो फॉलो यूज़र कहाँ पर है? सबसे पहले तो मुझे फॉलो ऑन फॉलो यूज़र, फॉलो लकी को 353 है लकी की, ठीक है। आई थिंक, आई गैस, लाइक कमेंट में लकी की 353 है, हाँ। तो लेट्स लकी को फॉलो करेगा आदित्य। तो यहाँ पर मुझे आदित्य का टोकन चाहिए, आदित्य, ओके। और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और इसी के साथ मैं जाऊँगा फॉलो ऑन फॉलो यूज़र में, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, एंड इसी के साथ इसको करूँगा हिट, और इट्स गिविंग मी अनऑथराइज। ओके, so let's check the API. Follow, first follow and then user ID. तो API users follow user ID and what's the port mapping. Okay, it is a port mapping. Let me okay, now let's hit आदित्य का टोकन लिया, कॉपी, सही तो है, बॉडी में कुछ नहीं। फॉलो दिस यूज़र, एरर भी नहीं आ रहा है। ओके सिट्स, यहाँ पर ये देना था मुझे, ऑलराइट। सो गाइस, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, आपको ध्यान में रखनी होगी। केवल स्लैश नहीं देने की वजह से ये एरर मिल गया हमें, ठीक है। सो लेट्स हिट नाउ। अब आई थिंक कोई एरर मिलेगा, नो नहीं मिला। फॉलो, यूज़र्स, अब की बार कौन सा एरर है? फॉलो यूज़र्स API पुट मैपिंग, ओके। सब सही तो लग रहा है। लेट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSOUT शाउट, ओके। फॉलो यूज़र एंड इसी के साथ ये, और इसको करते हैं हिट। नाउ लेट्स चेक, ओके। और करते हैं हिट, चेक करते हैं। ओके, ये कॉल ही नहीं हुआ, व्हाई इट इज़ नॉट कॉल्ड। अरे यहाँ पर तो आना चाहिए था। फॉलो यूज़र आईडी, पाथ वेरिएबल, फॉलो यूज़र आईडी, रिक्वेस्ट हेडर, ऑथराइजेशन स्ट्रिंग, ओके। पुट मैपिंग, और ये अच्छा API यूज़र्स, फॉलो एंड फॉलो यूज़र ID, ओके। तो यूज़र्स फॉलो, एंड यहाँ पर टोकन भी सही है। तो ये दिक्कत क्यों कर रहा है?
तो सबसे पहले मैंने किया था ना प्रिंट, तब भी ये प्रिंट नहीं हो रहा है यूज़र कंट्रोलर में। क्या बात है भाई, अनफॉलो में 3 आ चुका है यहाँ पर भी। दैट्स द प्रॉब्लम। Okay guys, spell mistake again and again. Okay, now let's check. So that's it, you are following lucky. So अगर हम lucky को get करें, ठीक है, get user by id, find user by username lucky, जैसे हम lucky को ऐड करेंगे आप देख सकते हैं उसके फॉलोवर में आदित्य आ चुका होगा। फॉलोवर्स, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फॉलोवर में आदित्य आ चुका है। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के लिए इसको अनफॉलो कर देंगे। तो जैसे ही मैं अनफॉलो करता हूँ, यू आर अनफॉलोइंग लकी, ठीक है, तो आदित्य ने सक्सेसफुली अनफॉलो कर दिया है लकी को। तो जैसे मैं यहाँ पर लकी को फिर से गेट करूँगा एक बार, अब देख सकते हैं उसका फॉलोवर जो है वो खाली हो चुका है। ऑलराइट गाइस, इतना ही नहीं, जैसे मैं इसको फिर से एक बार फॉलो करता हूँ, ठीक है, इसको फिर से मैं फॉलो करता हूँ, यू आर फॉलोइंग लकी, तो अब मैं लकी का फॉलोवर बन चुका होगा, ये देख सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर आदित्य को गेट करूँगा, ठीक है, तो उसके फॉलोइंग में लकी होगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग में आदित्य है, आदित्य के फॉलोइंग में आदित्य क्यों आया, यहाँ पर तो लकी होना चाहिए। तो समथिंग रॉन्ग in our user service implementation, so where it is, ओके, सो हमने जहाँ पर यूज़र के लिए लिखा है फाइंड यूज़र बाय आईडी नहीं, अनफॉलो यूज़र नहीं, फॉलो यूज़र, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है तो देख लेते हैं वही मिस्टेक को। यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव फॉलो यूज़र, ओके, रेग यूज़र डॉट गेट फॉलोइंग, इसकी फॉलोइंग में हम ऐड करेंगे लकी को, ओके, और फॉलो यूज़र डॉट गेट फॉलोवर, फॉलोवर में तो ऐड होता ही है फॉलोवर, तो यहाँ पर भी फॉलोवर होगा, फॉलोवर, ओके, नाउ लेट्स चेंज इट, एंड यहाँ पर भी सेम फॉलोइंग की जगह फॉलोवर को रिमूव करेंगे, फॉलोवर को। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनफॉलो कर देता ताकि वहाँ से वो निकल जाए, अनफॉलो। और अब मैं अगर आदित्य को गेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इसको अपडेट कर लूँगा और इसके बाद फिर से मैं फॉलो करूँगा, फॉलो नहीं, फॉलो करूँगा। सो यू आर फॉलोइंग लकी, एंड नाउ लेट्स चेक द लकी। सो आदित्य को चेक करते हैं सबसे पहले। सो देख सकते हैं, अच्छा फिर से आदित्य के फॉलोइंग में ये आया, लकी आना चाहिए था ना। और अगर लकी को गेट करे तो लकी के तो फॉलोवर में आदित्य आ रहा है, इसमें सही है। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया, सबसे पहले जो रेग यूज़र, अनफॉलो नहीं फॉलोवर में देखते हैं, रेग यूज़र। सो रेग यूज़र हम पास कर रहे हैं, रेग यूज़र कौन सा है, रेग यूज़र जो है वो है आदित्य नहीं, यू आर फॉलोइंग लकी,
आदित्य लकी को फॉलो कर रहा है, मीन्स आदित्य रेक यूज़र है, ठीक है। रेक यूज़र हमारा कौन है? आदित्य है। और जो फॉलो यूज़र, हमें जिसको फॉलो करना है, फॉलो यूज़र, वो है लकी फॉलो यूज़र। सो लकी को ऐड करना है हमें फॉलोइंग में, तो यहाँ पर आएगा फॉलो यूज़र, फॉलो यूज़र, ओके। फॉलो यूज़र आएगा। तो जो फॉलो यूज़र है इसकी आईडी कहाँ पर सेट हो रही है? यहाँ पर तो फॉलोइंग की हो रही है, फॉलोवर, ओके। यहाँ पर फॉलो यूज़र आना चाहिए था, फॉलोवर नहीं, फॉलो यूज़र, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। फॉलो यूज़र, फॉलो यूज़र, कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके। अब इसी के साथ यहाँ पर फॉलोइंग आएगा, फॉलोइंग, और यहाँ पर भी ऐसी मिस्टेक हुई होगी, फॉलोवर की जगह वो डाल दिया हमने, ठीक है। तो फॉलो यूज़र आएगा, फॉलो यूज़र, यहाँ पर भी फॉलो यूज़र आएगा, फॉलो यूज़र, फॉलो यूज़र, फॉलो यूज़र, ऑलराइट। एंड यहाँ पर गेट यूज़र इमेज। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है गेट यूज़र इमेज में? एक बार सेव करते हैं। सेट यूज़र इमेज एंड यहाँ पर आएगी गेट इमेज, ओके। यहाँ पर भी आएगी गेट इमेज, और इसी के साथ इसको सेव करते हैं, ओके। नाउ लेट्स चेक इट। सब कुछ ठीक हो चुका होगा। फिर से हम इसमें जाएंगे, इसको करेंगे फॉलो, यू आर फॉलोइंग लकी, एंड यहाँ पर लकी को चेक करेंगे तो लकी में तो फॉलोवर में आदित्य है ही, लेकिन अगर हम आदित्य को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी फॉलोइंग में लकी आ चुका है, ठीक है। ये जो आदित्य था वो पहले का था, जो कि हमने एरर फिक्स कर चुके हैं। अब लकी इसके फॉलोइंग में आ चुका है। तो गाइस, जब भी हम यूज़र को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो जो रेक यूज़र होता है उसकी फॉलोइंग में वो चला जाता है, और जिसको फॉलो करते हैं उसके फॉलोवर भी अपडेट होता है। रेक यूज़र की फॉलोइंग अपडेट होती है और जिसको फॉलो करते हैं उसका फॉलोवर अपडेट होता है, ठीक है। और अब हमें रेक यूज़र को फाइंड करना है। तो रेक यूज़र के लिए हम इसी टोकन को कॉपी करेंगे और जाएंगे गेट रेक यूज़र में, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, रेक यूज़र प्रोफाइल, और जैसे इसको हिट करेंगे इसने दे दिया हमें एरर। देखते हैं इसमें कुछ एरर है। जी बिल्कुल एरर है। क्या एरर है कंसोल में? हाँ, नॉट एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन, फिर से नॉट एक्सेप्टेबल। वाओ ग्रेट, कितनी बार आएगा ये एरर? नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। अरे भाई, तो क्या एक्सेप्टेबल है ये बताओ मैं। ऑलराइट, सो लेट्स चेक द यूज़र कंट्रोलर। डेफिनेटली दिक्कत इसी में है। तो रेक, ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़र टैग, तो एक्सेप्टेबल पुट मैपिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा
कैट मैपिंग, ठीक है। ये पुट मैपिंग किसने लिख दिया, ये दिक्कत थी। अब इसी के साथ इसको करेंगे अपडेट। यहाँ पर भी देख लेंगे गेट मैपिंग है, यहाँ बिल्कुल गेट मैपिंग है। राइट, इसी के साथ करेंगे इसको हिट और आप देख सकते हैं आदित्य आ चुका है, मीन्स रेक यूज़र। अब इसको एडिट करेंगे हम। तो एडिट करने के लिए इसमें मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, एंड जेंडर एज ऐड करते हैं। दो चीज़ ऐड करते हैं, मोबाइल नंबर एंड जेंडर। सो यूज़र को अपडेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई है मेथड, गेट रैग यूज़र, फाइंड बाय यूज़र नेम, सेव, सर्च यूज़र, फॉलो। आई डोंट थिंक एडिट के लिए कोई है, ठीक है, तो हम नहीं बनाएंगे। इसको कर दे कॉपी और ऐड न्यू रिक्वेस्ट, दिस आवर अकाउंट एडिट, ओके। एंड इसी के साथ हम आदित्य के कॉपी, चलो लकी को अपडेट करते हैं। लकी का टोकन ले लेते हैं, कॉपी और न्यू रिक्वेस्ट, एडिट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। ऑथराइजेशन में बेरे टोकन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, इसको करते हैं सेव, और बॉडी में रो, टेक्स्ट में जेसन, एंड यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर चेंज करते हैं। एक तो मोबाइल नंबर देते हैं 9080702466, 6 हुआ, 8 हुआ एंड ये 10 हुआ। और इसी के साथ इसकी जेंडर को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं मेल। इसी के साथ इसको करेंगे पुट रिक्वेस्ट, नॉट पोस्ट। इसी के साथ इसको करेंगे हिट, और अनऑथोराइज आ चुका फिर से API यूजर्स अकाउंट, इट विल सी यू एंट्री अकाउंट एंड एडिट, लेट्स सी। क्या एरर है, कैन नॉट इन्वोक जावा डॉट lang and this equals object because the return value of dot get id is null. null कैसे आई, ओके। सो चलो देखते हैं हमने इसके लिए क्या लॉजिक लिखा है। अकाउंट एडिट के लिए स्टोरी सर्विस की अब ज़रूरत नहीं है, स्टोरी कंट्रोलर की भी ज़रूरत नहीं है। यूज़र अपडेटेड यूज़र एंड यूज़र डॉट एग्जिस्टिंग यूज़र, updated user dot get id and equals existing user dot get id। तो ओके, जिस यूज़र को हमें अपडेट करना है उसकी आईडी भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आईडी एंड आईडी क्या होगी, लकी की आईडी 353 है, राइट, या 353 है, राइट। नाउ लेट्स हिट। सो ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेंडर चेंज हो चुकी है, मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका है। ओके, सो हमारी अपडेट API सक्सेसफुली वर्क कर रही है। और इसी के साथ हम मोबाइल नंबर की जगह अगर बायो डाल दे हैं, बायो, ठीक है, तो
हाय आई एम लकी फ्रॉम नोएडा, ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं। तो हाय आई एम लकी फ्रॉम नोएडा। सो ये भी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है गाइस हमारी सभी एपीआईज। तो इसी के साथ हमारा बैकएंड ख़त्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमने रिएक्ट के साथ इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड बनाया है, ठीक है। इसमें इस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, ओके, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।